Rahim. Assalamu alaikum. How are you, students? This is your computer teacher, Ms. Asma, and today we are going to start our new chapter, chapter number 7, and the name is Managing Databases. The word database management refers to storage and management of data. In computer, databases are maintained with the help of database management systems, DBMS. A DBMS is a software which is used to manage a database. A DBMS software allows you to store an organized collection of data, one or more related subjects. ठीक है जी? Some examples are FoxPro, DBase Third Plus, Oracle, and Microsoft Access. And in this chapter, you will be introduced to Microsoft Access, popularly called Access, as a database management system. Here are some of the advantages of a database. Database reduce the data redundancy to a large extent. Databases can control data inconsistency to a large extent. Databases facilitate sharing of data. Databases help to enforce standards. Databases can ensure data security. And now the components of a database. Data in a database is stored in a database file. जो हमारा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस जो मेंटेन करता है उसमें स्टोर किस तरह होता है डेटाबेस फाइल में हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है डेटाबेसेस फाइल इन एक्सेस आर स्टोर्ड विद एक्सटेंशन MDH. Within the file, data may be arranged in a group of tables related to one another. एक फाइल जो होती है उसमें हमारा सारा डेटा किस तरह अरेंज होता है टेबल्स की फॉर्म में ठीक है जी द टेबल कंटेन्स डेटा अरेंज्ड इन वेरियस fields and records. Access offers you many features to let you manage your data, and these are tables, queries, forms, reports, data access pages. In this chapter, we will discuss how to create a table and store data in it. जो हमारा पूरा डिटेल्ड डेटा है जो इंटर रिलेटेड है आपस में उसको एक टेबल बना के किस तरह उसमें स्टोर करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे बट बिफोर मूविंग अहेड टू मेक अ टेबल लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स. एक टेबल जिस तरह बनाया जाता है उसको बनाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका समझना जरूरी है. The number one is field. A place where one type of information is stored is called a field. एक तरह की इंफॉर्मेशन जहां स्टोर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं field. For example, a table containing information about students in a class. ठीक है जी एक टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन है जो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी like their roll numbers, names, age and phone numbers will have all the names stored in one field. ठीक है सारे नाम एक फील्ड में स्टोर किए जाएंगे एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अनदर सबकी एज एक दूसरी फील्ड में एंड सो ऑन. ईच फील्ड इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक फील्ड नेम और आप हर उस फील्ड को एक प्रॉपर नाम दे देंगे जैसे सबके नाम के लिए कोई एक फील्ड सबकी एज के लिए कोई और रोल नंबर के लिए कोई और एंड एक्सेट्रा. सेकंड इज रिकॉर्ड. Data entered in a set of fields which are related to a particular item, say a person or a thing, form a record. ठीक है जी जब डेटा जो आप एंटर करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में जो कि रिलेटेड है किसी भी पर्टिकुलर आइटम से या किसी पर्सन से या किसी थिंग से वो मिला के क्या बनाते हैं रिकॉर्ड.
Table: many records together arranged in a tabular structure to make a table. A table is made up of rows and columns, each of them having a unique name. Rows और columns पे मुश्तमिल होता है ये जो table होता है, और ये मिलकर एक complete record बनाता है. Generally, a column in a table containing information of a particular type represents a field, whereas a row containing information of all the related fields forms a record. Rows में जो information है सारी वो और इसी तरह जो columns में है ये सब जब मिलके interrelated form की जाती हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक record complete बनाते हैं. Database: a set of tables and related objects stored in a file make one database. Let us understand the above terms with the help of an example. अब एक example के through इन सब terms को समझ लेते हैं. The hospital stores information about the doctors like their names, their telephone numbers, their field of specialization, days and timings of their regular visits, and any emergency calls that may have been made. एक हॉस्पिटल है, ठीक है जी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन है डॉक्टर्स से रिलेटेड, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए, किस फील्ड के वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनके डेज और विजिट के टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ, ठीक है. The information of all the doctors on the hospital's panel in various tables, when combined together, will be called as a database of doctors in the hospital. इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो कि उन डॉक्टर्स की है जो एक हॉस्पिटल के पैनल पे होंगे, मुख्तलिफ टेबल्स में जो स्टोर की गई होगी, जब आप उसको कंबाइन कर देंगे एक जगह एक फाइल में, तो दैट विल बी कॉल्ड डेटाबेस ऑफ डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल. Now, starting MS Access. Microsoft Access, popularly called Access, is a versatile database management system. Access is a part of Microsoft Office package. It provides an extensive menu system to create files, add, edit, and update the data in the files and to generate reports. ठीक है, आप इसकी हेल्प से क्या करते हैं? आप फाइल्स बनाते हैं, उनमें एडिशन कर सकते हैं, किसी किस्म की एडिटिंग या चेंजिंग कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं. To start MS Access, follow the steps given below. Open the Start menu by clicking on the Start button. Open the All Programs menu by clicking on Programs. Click on Microsoft Access in the Programs menu. The Access window appears as shown in the diagram. The Access window has the following components. Title bar, it is the topmost bar on the screen that displays the Access program icon, its name, and the three control buttons. Menu bar, the menu bar displays the name of various menus. Task pane, a large box present at the right side of the window which shows different options according to desired action of the user. Toolbar, the toolbar displays the shortcut buttons for the frequently used commands. Status bar, the status bar appears at the bottom of the screen and displays important messages about the database, thus specifying the current status. Now we will learn about the table structure. Data is stored in a tabular form that consists of rows and columns. Generally, columns are the fields that contain the data items and rows refers to the records. ये अभी हमने पीछे भी जब हमने पढ़ा है इनके बारे में, fields और records के बारे में, वहां मैंने आपको ये चीज explain की.
A table has different types of fields that store various types of data. The various types of data that can be stored in table in Access is as follows. Numeric field. A numeric field can have the numeric data in it. Once a field is marked as a numeric field, it will accept only numbers and not the letters or other symbols. Numeric field में आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स टाइप का डेटा न्यूमेरिक टाइप का डेटा एंटर करते हैं और जब आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये न्यूमेरिक फील्ड है फिर आप उसमें किसी किस्म के लेटर्स या सिंबल्स ऐड नहीं कर सकते. Text field. A text field can contain letters, numbers and symbols, but the numbers entered in a field, text field, cannot be used for any type of calculation. Text field में characters के साथ सिंबल्स के साथ आप नंबर या न्यूमेरिक डाटा भी एंटर करते हैं बट दैट इज नॉट फॉर कैलकुलेशन. जैसे एक हाउस एड्रेस है उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट फॉर्म में भी आप डेटा डालते हैं और इस तरह कोई ना कोई हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर होता है बट दैट इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, दैट इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. करेंसी फील्ड. अ करेंसी फील्ड कंटेन्स अ करेंसी सिंबल, two decimals and commas if needed. Date and time field. A date and time field can contain a valid date and time. Memo field. A memo field allows a long text like a paragraph to be entered. To define a table structure, follow the steps given below. Click on File option in the menu bar. Click on New option in the drop-down menu. You will see several options under the New heading inside the task pane on the right side of the window, like this, as shown in the picture. Click on Blank Database. The File New Database dialog box appears as shown below, like this. This dialog box asks you to specify a name for the database file and the location where it is to be saved. जैसे आप Microsoft Word पे करते हैं या PowerPoint पे करते हैं, जब आपको उसको सेव करना है नाम को तो वो आपसे नाम भी पूछेगा जो कि आप फाइल नेम की जगह पे लिखेंगे और किस लोकेशन पे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको सेव करना है वो पूछेगा. ये दोनों चीजें डाल के तो फिर आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो ये वहां पे उस स्पेसिफिक नाम से आपके डेटाबेस को क्रिएट कर दिया जाता है. Select the folder in which the table has to be stored from the Save In option. Type a name, whatever, to be given to the database in the file name box. Click on Create button. The following dialog box appears. Click on Tables tab under Objects. The following three options are displayed. Create table in design view, create table by using wizard, and create table by entering data. In this section, we will learn how to create a table in design view. So double click on the create table in design view option. हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि एक टेबल को डिजाइन व्यू में किस तरह से क्रिएट किया जाता है. तो उसके लिए जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप किस पे डबल क्लिक करेंगे? क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू ऑप्शन. The table window contains a title bar displaying the name of table. The screen is divided into two parts. The upper half, known as the top pane, is used for entering the field name, data type and description. ठीक है जी, ये top pane कहलाता है जो उसका upper half होता है. The lower half, known as the bottom pane, check the data and the program accepts. Place the pointer in the first row under the field name and type the name of the field roll number. ठीक है, आप उस field को क्या नाम दे देंगे? Roll number का. Move the pointer to the data type column and enter the data type as number. Numeric assign कर देंगे आप उसके data type को. The description box is optional. You can ignore it for the time being. For numeric fields, the field size in the bottom pane is set by Access. Microsoft Access उसको
खुद ही फील्ड साइज को क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। टाइप द नेक्स्ट फील्ड नेम एज नेम। आप नेक्स्ट फील्ड नेम जो है उसको क्या नाम देंगे, नेम का। एंटर द डेटा टाइप एज टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको करेक्टर इनपुट करना होगा। डेटा टाइप आपका कैसा होगा, जहां आप नाम डालेंगे टेक्स्ट टाइप का, तो आप उसको क्या डेटा टाइप असाइन करेंगे, टेक्स्ट। In the bottom pane, enter the field size 20. By default, the text field size is 50 characters. By default का क्या मतलब है कि अगर आप सेट नहीं करेंगे तो वो किस हद तक उसमें इनपुट लेगा, उसका टेक्स्ट साइज क्या हो सकता है, 50 कैरेक्टर्स तक का, लाइक दिस। ठीक है। एंटर द नेक्स्ट फील्ड नेम एज एज एंड डेटा टाइप एज नंबर। एज के लिए आप क्या डेटा टाइप असाइन करेंगे, नंबर या न्यूमेरिक। Enter the next field as date of birth and the data type as date. Enter the next field as father's name and the data type as text. Enter the next field as telephone number and the data type number. Now saving the table. After entering the details for defining the table structure, click on the file option in the menu bar. Click on save command. Enter the name as STUBA and click on the OK button. The table structure gets saved. Closing the table window, click on the file in the menu bar in the table window. Click on close in the drop down menu, closing the database window. Click on file in the menu bar in the database window. Click on close option. Entering data in the table. After creating the table structure, data need to be entered into the table. For entering data in the table, follow these steps. Open the database file by the name school.mdb. The following window appears like this. Click on the Tables tab under Objects. Double click on the table name जो आपने assign किया था. An empty table appears like this. इस तरह आपने फील्ड नेम असाइन करके एक टेबल जो क्रिएट किया था, जब आप उसको ओपन करेंगे उसमें डाटा एंटर करने के लिए, तो इस फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे वो आएगा. Enter the details like roll number, name, age, date of birth, father's name and telephone number in the respective fields for the student with roll number 1. 1 से आप स्टार्ट करेंगे और ये सारी डिटेल्स आप उसमें एंटर करेंगे. Enter the details for the student record for the next student like second student in respective fields. After entering the first two records, the table appears as shown below. जब आप एक और फिर उसके बाद next डेटा एंटर कर देंगे स्टूडेंट्स का, तो किस तरह उसकी पिक्चर आपके पास हो जाएगी. Likewise, enter the data for all the students of the class. Close the table by clicking on the close button represent on the top right corner of the table. Cross से आप उसको close कर दीजिए. On closing the table gets saved automatically. Printing the table. Open the table with the name given. Click on File menu in the menu bar. Select Print option in the drop-down menu. The Print dialog box appears. Make appropriate selections in the dialog box and click on OK to print. The contents in the table get printed. Now, how you will exit Access? To exit from Access, click on File menu, click on Exit option. Thank you.